Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning. Slightly better, maybe a day or two more. Let us see. Good morning. There's a review today. Let's see. Anti corruption governance, bodies relating to it, and Lokpal. Now, equally important for the pre and the mains, and we derive certain analytical arguments from what are the factual aspects of Lokpal and generally Lokaru, right? So, how do we generally prepare this? When we study Lokpal, or let us say Lokayukt in general, we keep Lokpal as the base, everything else is a mirror. Lokpal is effectively a statutory body set up under the Lokpal and the Lokayuks Act of 2013. And we look at the larger ideas. First, what is it that the Lokpal does? Second, we look at the composition. We understand how our Lokpals appointed because the process is slightly convoluted. Then we generally look at conditions of service, which includes how long are you going to be in the office for, can you work after you're retired, uh, how are you removed, and so on and so forth. Basis of this information, we will now develop what is generally called a means template over and above this. ठीक है. सबसे पहले लोकपाल के बारे में जो बेसिक चीजें उनको सीख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या है, उससे हमारा बेस बन जाता है. सो लेट अस. लोकपाल इज फंडामेंटली an investigation and a prosecution agency. And when we say prosecution, it does not mean that they are the ones who would have any judicial power. It simply means that they would have a division which would spearhead events in courts. I'm not in a bit. So therefore, for simplicity purposes, Lokpal is fundamentally an investi- investigative agency. Okay. So what does it do? Lokpal simply, fundamentally, looks at high-end corruption. So high-end corruption means you're covering ministers and all ministers and all members of parliament, including the prime minister. Generally, there has been an issue of prior consent. Here, Lokpal tries to address it. All A, B, C, D group officials who are working for the center, then any chair, member, office holder of any corporation, any society, any board, anything which is any body which is largely funded by the state, and any society or any trust or any body which receives a foreign contribution of, let us say, more than 10 lakhs. So fundamentally, this is the positioning of Lokpal. Now, anyone can file a complaint to Lokpal. Anybody, any upstanding citizen, anybody can file a complaint to Lokpal. But the offense has to always be strictly under Prevention of Corruption Act 1988, amended in 2018. Right? Now,
Lokpal will have multiple wings. One wing is called the inquiry wing. Now, the inquiry wing will generally conduct the inquiry. It is called a preliminary inquiry. It can do it internally. FEMA regulates foreign funding. Yes, it is generally, for example, Lokpal can undertake the investigation themselves or can refer the investigation to CBC or CBI within specific timelines. Right? Two, we've got proper notes. You can download them from the Telegram channel directly. Two, once the inquiry has been completed, remember there was always corruption, always had an issue of prior sanction. Right? Who is going to give you a sanction? A person higher in authority. Technically, there's nobody higher in authority than members of parliament because the people have chosen them. They are not appointed offices. In a way, the same would apply to ministers, especially prime minister. So once the inquiry has been completed, या तो लोकपाल ने खुद ही से इंक्वायरी करी है, or they have sent it to your CBI and have received an inquiry report. Then a prosecution wing, which will generally have three members in it, will grant whether prior sanction has to be given or not. Prior sanction has to be given for what? Prior sanction has to be given so that a formal complaint can be filed in the court, and therefore we can start. I'm just checking 1 second. Yeah, no, voice is not breaking. Voice is not breaking. No. तो एक बार इंक्वायरी विंग समझ में आ गया और प्रोसिक्यूशन विंग ने देख लिया, प्रोसिक्यूशन विंग ने कहा ठीक है प्रायर कंसर्न देते हैं, then you can file a formal complaint. Okay, in a way start with the judicial process. Basically ये कहना है. Now, if the Lokpal has referred the case to the CBI or any central investigation agency, then Lokpal will have superintendence over that case. So for that reason, in our trinity of affairs, Lokpal in some cases becomes equivalent to the CBI when the Lokpal has referred a case to the CBI for examination. Are we clear on this? Do we understand this? Yes or no? Simple enough. Good. Now, Lokpal will generally have one person who's chairing. There are going to remember how tribunals had judicial and technical members. So, judicial and four non-judicial members. Out of these members, about 50% members come from a few vulnerable sections like castes, women, or minorities. Okay, castes, women, or minorities. Are we okay with this? Clear? No service, there is no lag. I'm running a parallel. Okay? Okay? Good. Now, the chairperson of the Lokpal can be a current or an ex CGI or a Supreme Court judge, current or an ex, because ultimately you are going to direct prosecution. Right? Clear? Good. Two, if
you're looking at judicial members. They can be current or ex Supreme Court judges, or current or ex Chief Justice of a High Court. And all of the non judicial members should have about 25 years of experience in finance, which includes banking, vigilance, investigation, and so on and so forth. And all of these nine people, 4 plus 4 plus 1, are chosen by a selection committee. Remember selection committee? ECI, CVC, so on and so forth. So selection committee. This selection committee will have the prime minister chair. You would have the Lok Sabha speaker, generally comes from the majority party, the leader of opposition in the Lok Sabha, and any Chief Justice or Supreme Court judge nominated by the CGI. So, if the CGI is not going to be a part of it, then the current CGI can be a part of the selection committee. Simple as that. This does not mean that the current CGI is a part of the selection committee और वो अपना ही नाम डाल बोल रहा है कि मेरे को तो चेयर बनाओ. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. And a jurist who's nominated by the committee. And here also, 50% of the members of the selection committee have to be from vulnerabilities like lower castes, women, minorities. Obviously, it's going to be very difficult to get minority numbers right here and here and here, right? Obviously. So, most likely Supreme Court, but I can't be sure. Speaker Lok Sabha can be sure. And this composition is really as per different states for different state level lokayogs. Now, your job is to perform high level corruption investigations. So, your salary has to be equivalent or like the Chief Justice of India. And so, the salary of the chair is like the Chief Justice. The salary of the have to be like other Supreme Court judges. And their salaries are charged to the Consolidated Fund of India. Your average term is your full term is for about 5 years, or let us say 70, generally higher than usual, whichever is earlier. And can you cannot hold any other office under the center or the state. You cannot contest elections for 5 years. You have been a member of Lokpal. And a member can also become a chair as long as your total period to serve is about 5 years. And chair cannot be, you cannot be, if you're the chair, you cannot be reappointed as chair again. Now, the removal process is exactly the same. Remember, there are two ways to remove CVC also. One is proved misbehavior and incapacity, wherein you'll have a proper uh, presidential removal after a Supreme Court inquiry, and then you will have, oh, you're insolvent, you're convicted for a moral offense, uh, you've been taking work, paid work outside office, unsound mind, body, whatever, uh, you have a conflicting financial interest, then you are directly removed by the president. Are we clear on this? Do we understand this? Yes or no? Good. So this is the general base. This is broadly what we should always know about Lokpal.
Now comes the add-on part. Now comes the analysis part. Now, if we look at current affairs, Lokpal has been in the news for fundamentally two reasons. One, in October last year, yes, so in October last year, cannot contest for 5 years as a cooling. Now, in October last year, the newspapers reported a very sharp decline in the number of cases that the Lokpal received. In 2022 to 23, Lokpal had received about 2,500 complaints. Last year, the Lokpal has received just about 230 complaints. So from 2,500 complaints to 230 complaints, there is a sharp decline in the number of complaints that the Lokpal receives, which means that there is a general of trust or awareness with respect to Lokpal. Second has been whether Lokpal has jurisdiction over judges and more specifically judges of the Supreme Court. तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा, लोकपाल ने जज के खिलाफ प्रोसेस शुरू कर दिया था. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और कहा कि अभी हम इसे एग्जामिन करेंगे. द फाइनल वर्डिक्ट इज नॉट आउट येट. आर वी विद दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? Good. Now, this conflict between Lokpal's jurisdiction to include judges or not. Let us generally also understand what this conflict is. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट लास्ट ईयर की ही बात है. सुप्रीम कोर्ट ने ये, पहली बात तो हमको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे और क्यों किया. लास्ट ईयर की बात है, एक लोकपाल का ऑर्डर था जिसमें एक अननेम्ड हाई कोर्ट जज के खिलाफ करप्शन का मैटर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. ये लास्ट ईयर जनवरी की बात है, एग्जैक्टली एक साल पहले. जो लोकपाल की जो बेंच थी वाज हेडेड बाय वेरी वेरी वेल नोन सुप्रीम कोर्ट जज खानवालेकर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज खानवालेकर. सेइंग, और उस जज में कहा, उस बेंच में कहा कि हाँ नहीं सही बात है, we as the Lokpal have the powers to hear corruption cases against former judges also under the Lokpal Act 2013. इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उठाया. Nobody filed the case. And generally the three judge bench, Justice Gavai, Justice Suryakant and Justice Oka, 2 out of the 3 are now chief justices. उन्होंने कहा ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है, एंड द मैटर हैज बीन पेंडिंग एवर सिंस. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? देखो, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार इस बात को एक्नॉलेज किया है दैट क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस, यू नो, इज, इस बात को माने कि द जजेस आर फार मोर ओपेकली प्लेस्ड. और ये जो क्रिटिसिज्म है ये वैलिड है. सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बात ये मानी है और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि अब इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस को जुडिशरी से हमेशा करके देखे. अब लोकपाल एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एग्जीक्यूटिव के अंडर, राइट? तो अगर ऐसा होता
तो टेक्निकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती. दैट हैज बीन द रैशनल बिहाइंड द सुप्रीम कोर्ट स्टॉपिंग इट. अंडरस्टैंड दिस. जो हमारा पुराना पीनल कोड है, अब बीएनएस हो गया, सेक्शंस आर मोर और लेस द सेम. उसमें एक सेक्शन 77 हुआ करता था, which is also there as it is, as it is in the new BNS. So what does the section say? I'll tell you. Section basically ये कहता है कि judges cannot be charged offense if the allegation is related to the exercise of their official duties. ठीक है. जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में भी यही है. इसी को एज इट इज जो सेक्शन 77 आईपीसी में था, इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस किया बिना कुछ चेंज करे अंडर सेक्शन 15 ऑफ द बीएनएस. ठीक है. कि अगर कोई जज पे आप कंप्लेंट ले डाल रहे हो कि काम कर रहा था, तो बात खत्म हो गई. याद है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में मैंने वीरास्वामी का केस बताया था कि वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, where Justice Veeraswamy, a former judge of the Madras High Court, was being investigated by the CBI for disproportionate assent, and he had gone to the Supreme Court saying ये केस तो हो ही नहीं सकता. Supreme Court ने कहा that a judge is a public servant and a judge should technically come under the public servant as per the Prevention of Corruption Act of 1947. तब वो लगी हुई थी. अब 1988 में रिप्लेस हो गई, जिसमें 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स करे. लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि द प्रेसिडेंट मस्ट सैंक्शन एवरी क्रिमिनल केस अगेंस्ट अ जज आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी फ्रिवलस कंप्लेंट. कोई जबरदस्ती उनको हैरेस तो नहीं करना. और यहां पे द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द सीजीआई. याद है हमने ब्रॉडली कवर किया था. यस. अरे भाई यस और नो. कुछ वीरास्वामी याद आ रहे हैं कि नहीं? वेरी गुड. इंटरेस्टिंग बात यह है कि द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ केस against a sitting judge is different from for impeaching a judge. आपको जज को इम्पीच करना है तो आपको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ेगा. इवेंचुअली वही है. तो इस सब के कॉन्टेक्स्ट में ये लोकपाल की कहानी कहां थी? एक हाई कोर्ट जज जिनका नाम ऑफिशियली नहीं निकाला गया, उनके खिलाफ 2 कंप्लेंट्स हुई कि उन्होंने एक एडिशनल और एक दूसरे हाई कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जो एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कोई केसेस सुन रहे थे. इनके हिसाब जो ये प्राइवेट कंपनी थी वो जज की एक क्लाइंट हुआ करती थी, जब जज नहीं एडवोकेट थे, वकालत करते थे. तो जो लोकपाल का ऑर्डर था, बस उन्होंने इसी बात पे बताया कि क्या मेरे पास एक पावर है एक सिटिंग हाई कोर्ट जज पे कार्रवाई करने की, क्या जो उन्होंने किया वो सही है. लोकपाल ने कुछ नहीं बताया था. ठीक. अब लोकपाल एक्ट क्या कहता है? लोकपाल एक्ट कहता है it shall be applicable to public servants in and outside. और लोकपाल के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14. और लोकपाल में भी जजेस का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखा है. जैसे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूजन होने चाहिए थे, नहीं लिखे. आर वी क्लियर ऑन दिस? बट लोकपाल के पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में ये जरूर लिखा है कि कोई भी इंसान जो
किसी भी ऑटोनमस बॉडी का चेयर है या मेंबर है जिसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई है, या जिसको स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियली कंट्रोल करता है, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। नाउ एक और केस बना जिसमें लोग डेफिनेशन लगाई और कहा कि ये हम सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ लोकपाल कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 124, नॉट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और यहां इस केस में लोग कहा हाई कोर्ट डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। Several high courts established and restructured under the Act 61, then the government of India 1935 है। These they said उन्होंने कहा these can be considered acts of parliament, correct। और हमारा जो एक जनरल एक्ट है, जो हमारा एक लीगल इंटरप्रिटेशन का एक्ट है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि acts of parliament will also include acts which are passed before the commencement also। तो लोकपाल ने ये भी कहा कि देखो ये तो बहुत बचकाना हो जाएगा, ये तो बहुत बचकाना हो जाएगा कि a judge of the high court will not come under the meaning of the word public servant। बहुत ही बेसिक सी बात कही, लेकिन वीरस्वामी की रूलिंग बहुत क्लियरली कहती है कि आपको बहुत साल की चलना है। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर ऑन दिस। एंड लोकपाल ने सीजीआई को फॉरवर्ड कर दिया कि आप बताओ हमें क्या। बिफोर कंडक्टिंग द इंक्वायरी द लोकपाल forwarded the complaint to the CGI। Are we okay with this? Yes or no? Voice is breaking। नो इशू। ठीक, नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। थोड़ा अपने एंड पे हो सकता है बट अपने हाथ चल रहा है। गुड, यहां तक समझ आया? वेरी गुड। तो दिस इज द लार्जर टू थिंग्स। आर वी ओके विद दिस? यस। लो जजेस का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो पूरी लोकपाल की कहानी है, क्यों है, किस लिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लोकपाल बनाने का रैशनल क्या था, क्या जरूरी थी। सी, लोकपाल इज टेक्निकली एन ओम्बड्समैन। मैंने आपको ओम्बड्समैन प्रिंसिपल बताया था, a term which is a Swedish term that came to being in 1800s, where there's a government authority responsible, a government authority responsible for investigating against corruption। पॉइंट ये है कि हमें एक रिलेटिवली मोर इंडिपेंडेंट और एक वाइड जूरिसडिक्शन की एजेंसी चाहिए थी, क्योंकि हमारा सीवी
यदि सिविल सर्वेंट्स को देख रहा था, सीबीआई में ऑटोनॉमी के इतने आसानी से मिनिस्टर्स को और स्पेशली हाई ऑफिसेज में मिनिस्टर्स को नहीं दिखता था कि अगर करप्शन हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे है तो क्या करेंगे। हालांकि अगर पीएम की बात आती है तो देयर आर सम सेफ गार्ड्स कि अगर इंक्वायरी प्रोसीडिंग से ये पता चलता है कि भाई कोई केस नहीं बनता तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी, इट विल बी डन वेरी कॉन्फिडेंशियली। बट एनीवेज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसका यही है कि it has to be, you have to have an organization which is independent, which will have some degree of impartiality. Procedure is going to be fair, with credible powers to review, and they will also do it confidentially. ठीक है, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें ये बनाना था। ये जो आइडिया है लोकपाल का, ये एक्चुअली बहुत पुराना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कस्ड इन द 90s। एआरसी रिपोर्ट, संथानम कमिटी अगेंस्ट करप्शन, के एम मुंशी, ए के सेन, सबका यही कहना है, सबका यही कहना था कि लोकपाल टाइप का कुछ होना चाहिए। ये जो हमारे करंट आईपीसी के टूल्स ऑफ करप्शन के टूल्स थे, दे वर इनसफिशिएंट। तो इसीलिए जरूरी था। तो एक्चुअली देखा जाए तो काफी लेवल तक, काफी टाइम तक स्टेट लेवल्स पे कुछ ना कुछ लोकपाल, लोकायुक्त, स्टेट लेवल पे लोकायुक्त का टाइम का कुछ ना कुछ हो रहा था। रिमेंबर लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले राइट टू इंफॉर्मेशन स्टेट्स में आई, फिर सेंटर ने लॉ बना के इसको कंसोलिडेट कर दिया। अब ऑल इंडिया के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून सेम है। ठीक है बेटा, क्लियर, गुड। तो लोकपाल में भी स्टेट लेवल पे लोक आयोग अपना अपना कर रहे थे। देन वी मेड अ यूनिफॉर्म प्रोसेस एंड ट्राइड टू put it together. But class is running perfectly on my end. Maybe because of the weather, some of you might be facing some issue. Ayushi is not facing an issue. थोड़ा सा तुलसी is, Gusimran is, Satvik is not. ना, ठीक। Now it's fine. थोड़ा सा I think it could be an internet issue. It just let me just get this part right. I will not push. Let me just finish. ठीक है, then I will not bother. और with the Anna Hazare movement, which was basically after some high level corruptions were unearthed, like the Aadhaar housing scam and so on and so forth, it gave that kind of a push for Lokpal to be created because of that movement. तो ये सब को ध्यान रखते हुए we ended up having a statutory body called the Lokpal and the Lok Act, which creates an independent ombudsman, basically. And the Supreme Court also, for example, in Common Cause versus Union of India in 2017, Supreme Court has said that the Lokpal is a fundamental, even if uska election में करोगे, fundamentally the idea of Lokpal works. ठीक है, all right. Jurisdiction clear है? Ministers, MPs, government servants, any institution which is financed, NGOs and other bodies also. हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं कि सिक्योरिटी आईआर, एंड लोकपाल में ये भी लिखा है कि लोकायुक्त मस्ट बी सेट अप स्टेट्स विद इन अ ईयर और सो, राइट? नाउ what does the lokpal do? We understood they inquire, they investigate, they sanction prosecution, and therefore uh, जैसे सीबीआई के वकील सीबीआई का केस सीबीआई कोर्ट में फाइल कर, सीबीआई के वकील मतलब वो वकील जो सीबीआई को रिप्रेजेंट करते, लोकपाल can also do that for their courts. They can, in the process of investigation, order for attaching assets, all of those things. And
there are inherently linked functions with the CBI. So how CBI has a dedicated director of prosecution. There is a panel of lawyers which is maintained with the Lokpal's consent, and a lot of times, uh, CBI cases, is referring a lot of cases to CBI and vice versa. So there is a similarity of placement. लोकपाल में given opportunity to present your case, ऐसा इशू है नहीं. तो लोकपाल में फंडामेंटली प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हैं. ठीक है ना. Fundamental issues with Lokpal are very simple. One, there is a general delay in operationalizing the act. Whether it is about operationalizing the setting up of Lokpal, or whether it is operationalizing generally the appointments on the office holders. लोकपाल एक्ट बना 2013 में. मेंबर्स अपॉइंट होते होते 5 साल लग गए. अब भाई एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना जरूरी है. लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी नहीं पूरी होगी. तो सिलेक्शन कमेटी नहीं पूरी होगी तो आपने लोकपाल रोक दिया. राइट. तो फिर उन्होंने जब लोकपाल फाइनली अपॉइंट किया, एक क्लियर कट लीगल लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था. फिर सवाल, ने तो 22 तरीके से अपॉइंट किया है. दूसरा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो फंडामेंटली ओवरलैप का ही है. ऐसा तो नहीं है कि लोकपाल कुछ डिस्टिंक्टिवली अदर काम कर रहे हैं. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. 3, स्टेट्स के पास एक रिलेटिव ऑटोनॉमी है लोकायुक्त स्टेट पे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा. अब फॉर एग्जांपल, दिस विल आल्सो इम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस. ऐसा नहीं कि कर्नाटक का लोकायुक्त का केस अपील होकर लोकपाल में आएगा, ऐसा नहीं है. इट इज लाइक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. अब कर्नाटक का लोकायुक्त 1980 से चल रहा है. सो बिटवीन फॉर एग्जांपल 1986 टू 2000, ये 15 साल में दे ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन अबाउट 2500 केसेस. उसमें से 1700 पे तो चार्जशीट भी बना दी. बट इतना सब करने के बाद भी रेट वाज लेस देन 6%. इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम ऑफ जस्टिस डिलीवरी में प्रॉब्लम है. एंड स्पेशली इफ यू लुक एट हाई प्रोफाइल केसेस, उसमें लोकपाल भी रिलक्टेंट रहेगा. यस और नो? करेक्ट. गुड. सो एज ऑफ नाउ जुडिशरी का स्टेटस क्लियर नहीं है. लोकपाल के पास कंटेम्प्ट पावर्स नहीं है. आप जो भी कंप्लेन करना चाहते हो 7 साल के अंदर कंप्लेन करनी है, तो देयर इज अ लिमिट. आपके पास जनरली जो कंप्लेंट्स आती है वो पेटी कंप्लेंट्स आती है. अब पुलिस वाले ने आपसे 100 रुपया मांग लिया क्योंकि आप पार्क में अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ बैठ के सनलाइट का एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो अब लोकपाल को कंप्लेन करोगे क्या? राइट. 2016 में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हुए जिसकी वजह से पब्लिक डिस्क्लोजर्स और कम हो गए. कुछ कुछ स्टेट्स में तो लोकायुक्त ठीक से बनाया भी नहीं है, जेएनके तमिलनाडु टाइप. और जहां बनाया है वहां कन्विक्शन रेट कम है. यस. तो इफेक्टिवली
Lokpal has just become any other body? Yes or no? And it eventually suffers from public trust. तो हमको कुछ सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे. तो जो सॉल्यूशंस है वो इमीडिएटली हो सकते हैं, जैसे ये लीडर ऑफ अपोजिशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर. एलओपी नहीं है तो उसकी जगह कौन हो सकता है? जो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, सुमोटो पावर्स ग्रांट करो, लोकायुक्त में यूनिफॉर्मिटी लाओ, बजट इंडिपेंडेंट, स्टाफ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सिविल कोर्ट की पावर होनी चाहिए, कंटेम्प्ट की पावर होनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स पब्लिकली डिस्क्लोज होनी चाहिए. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है ये अंजलि भारद्वाज के केस में. और लोकपाल इनफैक्ट हैज अडॉप्टेड ई टूल्स और डिजिटल टूल्स फॉर देयर वर्क. कि आप विजिटर मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट डिजिटली कर रहे हो. सबसे शानदार ग्लोबल ओम्बड्समैन स्वीडन का है, सबसे शानदार. एनुअल रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को जाती है. श्योर आदित्य, वेरी हाई पब्लिक ट्रस्ट. They handle about 5,000 cases in a year. Even and Swedish ombudsman is, I think, was set up in 1809. New Zealand 1962. Very broad jurisdiction. नोट करते हैं. Understood? Yes. Good. इसमें आप विसल ब्लोअर सेफ्टी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सारी चीजें लिख सकते हो. More than 85% of complaints that Lokpal received were dismissed. 2024 में. आज कॉमनली न्यूज में रहा है 20 स्टेटों में लोकपाल है, 28 के खिलाफ. तमिलनाडु ने 2024 में एक बिल लाया था, वो चैलेंज इन द हाई कोर्ट है. चेयरपर्सन पिनाकी का टर्म 2022 में एंड हुआ. देन प्रदीप मोहन मोंटी वाज हेडिंग इट. उसके बाद बाय मिड 25 आई थिंक 4 आउट ऑफ 8 पोस्ट वर वेकेंट. कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लोकपाल ने. फिर ये भी इल्जाम लगे कि लोकपाल इज लुकिंग एट सिलेक्टिव प्रोब्स अगेंस्ट ऑपोजिशन, कि आप पार्टीज के घर पे सीबीआई रेड्स. कॉमन कॉज ने, एक एनजीओ ने पिटीशन भी फाइल करी कि भाई आप सिलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, प्रॉपर क्राइटेरिया बताइए. 2025 में 15% तो बजट ही काट दिया, जिसकी वजह से सारे मेजर्स अटक गए. अडानी ग्रुप के पे जो एलिगेशन कि भाई आप टाइप कर रहे हैं, आपको अनजस्ट एनरिचमेंट है, वो टेक्निकल जुरिस्डिक्शन रिलेटेड इश्यूज की वजह से आपने उसको हॉल्ट कर दिया. लोकपाल वर्सेस सेबी वाज अ केस. ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? तो इतना कुछ है जो हो रखा है, and unfortunately they have really not been able to get it right. Are we okay? समझ आया?
They don't submit an annual report. दूसरा कुछ करेंगे तो सबमिट करेंगे ना दीक्षा. ठीक है, चलो डन. Quickly get this part done. So anti-corruption governance is over. Just give me 1 second, please. No, no, they don't publicly give the reasons. ठीक है. So tomorrow we do sectoral governance and good sectoral governance and good governance. So I want to corporate. I want to do regulatory governance. I want to do e-governance, citizens charter, those things. Is that okay? Yes or no? And then we'll move to social justice. Hopefully, should be able to finish this week. Yeah, yeah, yeah. Of course, of course. Done. Okay. Thank you.